Hello everyone, welcome to 3. Today we are going to discuss the poem Postcard from Kashmir by Agha Shahid. So this poem is the opening poem of the volume The Half-Inch Himalaya, which was published in 1987. And in this poem, the poet stresses the distance and longing for home in very first line. In Kashmir, the beloved homeland has metaphorically shrunk and is now ironically reduced to a postcard. The poet emphasizes that he always loved neatness in this poem, as he says, and home is now a neat 4 by 6 inches postcard. The poem derives its impetus from this irreducible gap between the reality and aspiration. So let's read how the poem goes on. The short poem by the poet. Kashmir shrinks into my mailbox, my home a neat 4 by 6 inches, which I just told you that he's saying his homeland Kashmir, maybe where he's born, he's very far away from that place, but now that place has been shrinked, or you can say it has just enveloped in that postcard, the postcard which he has just received. I always loved neatness. Now I hold the half-inch Himalayas in my hand. It means that he has always loved neatness. साफ सफाई बहुत पसंद थी उसको, लेकिन आज वो नीटनेस, यहाँ पर देखिए आयरॉनिकल सिचुएशन है. वो कह रहा है कि सफाई नीटनेस बहुत पसंद थी उसे, साफ़ सुथरा काम हो, लेकिन जो आज ये हाफ-इंच हिमालयाज़ हैं उसके हाथ में, मीन्स द पिक्चर ऑफ Kashmir and Himalayas in his hand on the postcard, it is creating a pain into his heart. This is home. This what? The postcard with the picture of Kashmir. He's saying that Kashmir was his home, and this the closest I'll ever be to home. और यहाँ पर उसका जो पेन है वो क्लोज कर रहा है कि सिर्फ पोस्ट कार्ड के थ्रू ही मैं इतना क्लोज, यही एक ज़रिया है. दिस इज़ द ओनली मीन्स ही कुड बी क्लोजेस्ट to his home. So it means that he will never be able to return or see his home again. When I return, the colors won't be so brilliant. The Jhelum's water so clean, so ultramarine, my love, so overexposed. अब वो क्या कह रहा है, अगर कभी मैं गया भी, if I was able to return someday, लेकिन that same brilliancy, same you can say the essence of nature, the climate and everything would have been changed. जैसा पहले था वैसा शायद कुछ भी पहले नहीं रहा होगा. ठीक है, चाहे वो झेलम का वाटर है या कोई दूसरी चीज़ें हैं. तो the poignancy increases when the poet confesses the impossibility of ever getting closer to home than this. In the previous line when I say, उसके कहने से पहले उसने क्या कहा कि and this is the closest, यही एक तरीका है जो मैं अपने घर के सबसे क्लोज जा सकता हूँ. हालांकि बाद में अगली लाइन में उसने कहा है कि when I return the colors won't be so brilliant. तो वो ये कह रहा है कि उम्मीद वो करे भी अगर, तो वो सेम चीज़ें शायद कभी नहीं रही होंगी. और इसलिए क्या कह सकते हो आप, he is just saying that the postcard must serve as a poor substitute for the absent proximity of the native land. तो ये पोम जो है, this is home, इसे ये it also means that poet would have to be content with this current place. यहाँ पर जो this is home का description दिया है, so the postcard is not home actually, his home is Kashmir, but Kashmir's picture on the postcard, he's just saying that he have to be content. उसी में उसे संतुष्ट होना पड़ेगा because he thinks he would not be able to go home and reside there again, or even if he goes,
the same thing will not be end. What he says at the end. तो वो क्या कह रहा है कि वो डिस्ट्रेस जो है वो उसमें उसने बताया है कि द कलर्स वोंट बी सो ब्रिलियंट, द झेलम्स वाटर विल नॉट बी सो क्लीन और ultramarine, my love so overexposed, and my memory will be a little out of focus in it. A giant negative black and white still undeveloped. और फिर वो क्या इन लाइंस में शो करने की कोशिश कर रहा है, दैट जो डिस्ट्रेस है उसका वो डिस्क्राइब किया है. Sorry. And the distress seems to be pervading the entire poem when he imagines that on his return he might not witness the beauty of Kashmir. It must be because of the terrorism which right now we can see is it was in Kashmir rally and all that. So his imagination is about those things, that when it was so beautiful, so serene, so quiet place like a heaven on earth, but it is not same now. So he just shows his feelings that it will never be the same. So he is describing his feelings about the nature, the climate, the mentality of people and everything that has changed towards the time. So he says that everything will be changed and nothing will be the same as when he left Kashmir. And you can say the poem is written in a free verse consisting of 14 lines, though 14-line poem is a sonnet, though it's not a sonnet, or which is not identically Shakespearean sonnet or traditional form of love poem, but it is a 14-line poem. So it is clear that ultimate aim of the poem is to channel the poet's unbounded patriotic love to Kashmir, the place he is proud to call home. So this is what he wants to say. Now you can see like words like shrink, Kashmir is shrinking into the 4x6 postcard, he's saying here, into the mailbox. ये रियल ग्रैंड्योर को डिस्क्राइब करके उसको डिमिनिश्ड फॉर्म में शो करना चाहता है कि कैसे एक ग्रैंड चीज़ को एक डिमिनिश्ड फॉर्म में पोस्ट कार्ड के ऊपर क्या किया है, इम्प्रिंट किया है, लेकिन वो उसकी जगह कभी नहीं ले सकता. ओरिजिनल कश्मीर की जो जगह है वो कभी नहीं ले सकता. ये एक इनडायरेक्ट आप कह सकते हो कि सिंबलाइजेशन इसका भी है कि कश्मीर की जो ब्यूटी थी, कश्मीर का जो एक ओहदा था स्वर्ग का, वो सब भी क्या है, लोगों ने उसको ख़राब कर दिया या उसको चेंज कर दिया है. और होम कह के जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि लोग पोस्ट कार्ड्स कहाँ से भेजते थे, कि कहीं आप छुट्टियों मनाने जाते थे तो वहाँ से पोस्ट कार्ड वगैरह आपको मिलता था, लेकिन यहाँ पर पोस्ट कार्ड घर से आ रहा है. तो वो जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है बर्थ प्लेस से एक पर्सन का, तो वो एक जो याद है, जो मेमोरीज़ हैं उसके होमलैंड की, वो एक 4x6 पोस्ट कार्ड से सिंपली दे आर evoked, and he just longs for the return, which is he says is not possible. And I hope that you all must have understood this poem. It's a very simple poem and very sweet poem, you can say, about the homeland. आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब ये ईमेल्स और ये जो फ़ोन्स थे, मल्टीमीडिया था, ये सब नहीं था, बट उस टाइम पर ये पोस्ट कार्ड्स एंड लेटर्स जो होते थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते थे. एंड जो याद, जो एक लॉन्गिंग होती थी, जब हमें पता लगता था कि कहीं से हमने लेटर लिखा है, वो पहुंचा होगा नहीं पहुंचा होगा, उसकी क्यूरियोसिटी हमें होती थी, इवन उसके जवाब की क्यूरियोसिटी हमें होती थी. आजकल तो सब कुछ बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, तो शायद आज की जनरेशन उस पोस्ट कार्ड की, उस लेटर की कीमत नहीं जानती है, लेकिन जिन लोगों ने उस टाइम को थोड़ा सा भी जिया है, लाइक इन वी कैन से हमारी एज ने उसको हाफ
एज ने देखा हुआ है, तो वी कैन से हमें उसकी इम्पोर्टेंस मालूम है। तो आज तो मल्टीमीडिया के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑल बहुत इजी हो गया एक दूसरे से किसी भी कोने में बात करना, लेकिन उस समय में ऐसा नहीं होता था। तो वो जो फीलिंग्स थी, वो ओरिजिनल फीलिंग्स बहुत जल्दी इन्वोक होती, शायद इसीलिए आजकल फीलिंग्स की और रिलेशनशिप्स की भी वैल्यू शायद घट गई कि सब कुछ बहुत ईजिली अवेलेबल हो गया है। तो ये जो पोम है ये जो शो करती है, लाइक लास्ट लाइन में जैसे उसने कहा है कि ओवर एक्सपोज्ड, his emotion reaches the climax here, my love so overexposed, line this is my love so overexposed, poet intentionally separates so overexposed from my love। देखो दोनों को अलग अलग किया है, इसे इंटेंशन कहते हैं कि जानबूझकर किया गया है, तो ये एम्फेसिस देने के लिए, पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स को जगाने के लिए है। It shows, the word overexposed shows how overwhelming the poet's nostalgic love to Kashmir is in a somehow distorted or explicit manner, just like a piece of photography that are overexposed or which has too much of light। तो उस तरह से ही क्या है, इस पोस्ट कार्ड ने क्या किया, उसकी धुंधली धुंधली यादों को, जब आप फ़ोटो खींचते हैं, आज भी मोबाइल से खींचते हैं ना, सेल्फीज़ पता नहीं कितनी बार लेते हैं, तो कहीं कम लाइट हो जाती है, कहीं ज़्यादा, जब ज़्यादा हो जाती है तो आपका फेस क्या है, एक तरह से धुंधला सा हो जाता है, प्रॉपर क्लियर पिक्चर नहीं आ पाती है, तो उसी को वो दिखा रहा है। जायंट एंड नेगेटिव, जायंट नेगेटिव जो वर्ड्स हैं, ये जायंट नेगेटिव ब्लैक एंड वाइट, तो ये टू एडजेक्टिव्स जो हैं, दे हेल्प contrast the shrunken idealized Kashmir in the postcard with the giant grim one in the reality। so यहाँ पर ये लाइन इस तरह से बताई है, black and white is use of metonymy for things happened in the past, the contrast, the stark color on the postcard। सो ब्लैक एंड वाइट क्या शो करता है, ये मेटोनिमी का यूज़ हुआ है यहाँ पर लिटरेरी फॉर्म का, और ये पास्ट की हैपनिंग्स को क्या है, शो करता है, और जो कलरफुल पोस्ट कार्ड की पिक्चर है उससे भी कंट्रास्ट करता है। तो इस तरह से ये बताया। जो लास्ट सेंटेंस है पोम का, इट इज़ स्टिल अनडेवलप्ड, इट इज़ फिल्ड विद क्वाइट अ नंबर ऑफ commas। So this structure reflects that memories are just piece of flashback and feelings that tangle together। हालांकि जो enchanting memories हैं वो थोड़ी सी मेसी होती हैं और ग्रेजुअली फेड भी हो जाती है, इसलिए क्या कहा है कि जो फॉर्म है, जो मेमोरी का फॉर्म है इसका स्पीकर का, वो क्या है, ब्लैक एंड वाइट है, नेगेटिव में है, और इस तरह से उसको एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये पोम जो है अच्छे से समझ आ गई होगी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको कहा था, एंड आई होप यू विल एंजॉय रीडिंग इट अगेन एंड अगेन। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग एंड एंजॉय लिटरेचर। बाय बाय।